Hi everyone, welcome back to Dev Sir's Mathemagic. Today a video lecture for 12th, applications of derivatives again, equations of tangents and normals. So let's see, straight away go to the problem. That day we saw the meaning of applications of derivatives, where it is used. We took one problem of how to find the equation of tangent and normal. So today आज क्या देखने वाले हो? Okay, we are going to find certain points on the curve, right? In the earlier question, point of contact was given, but now point of contact is asked. So let's see the question. Find the equations of tangents to the curve. This is the equation of the curve. हर एक curve को एक equation रहती है, such that the tangents are parallel to the x-axis. Tangents are parallel to the x-axis. That is the condition. Okay. Now, what is the hint or key step? Get dy by dx equal to 1 minus x upon y minus 2 equal to 0. अब ये equal to 0 क्यों आ रहा है देखेंगे, right? So if you see the diagram, you will understand the question perfectly. This is the equation of the curve. This equation. This is the curve. This is the tangent. ये tangent है. Point of contact पूछा है, लेकिन दो points आने वाले हैं, because there will be two cases. So because one point will be here, one point will be somewhere over here, there will be two tangents. That is the reason उसके लिए पूछा है equations of tangents क्या है, यानी दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अलग अलग है. केस 1 के लिए एक टेंजेंट है, केस 2 के लिए एक अलग टेंजेंट है. ऐसे देयर आर टू आंसर्स, राइट? दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड. ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट नोन. सो उसके लिए क्या करना है देखेंगे. हिंट में बोला है ऑलवेज कौन सा भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, फर्स्ट थिंग इज टू डिफरेंशिएट. वो इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करो और dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करो. ऑलवेज एनी कर्व इज गिवन, फर्स्ट फाइंड dy by dx. ओके, दैट गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग ने सीखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, फाइंड dy by dx, दैट विल गिव यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट pxy. Okay, right? So how do we start the problem now? So as I said, start with equation of curve. Differentiate with respect to x. वो तो 80-90% of the time differentiate with respect to x ही है. हर एक जगह d by dx of x squared plus d by dx of y squared माइनस 2 कांस्टेंट बाजू को रखा है, d by dx of x. ओके, माइनस 4 कांस्टेंट बाजू को रखा है, d by dx of y प्लस d by dx of 1. सब जगह पे dy by dx आया है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ लेट अस फाइंड व्हाट इज एक्चुअल dy by dx. दैट इज आवर मेन पर्पस, to find dy by dx from the equation of the curve. Okay, so we get this. Derivative of x squared 2x, derivative of y squared 2y dy by dx. Derivative of x is 1, so minus 2 into 1 minus 4 d by dx of y is dy by dx. And derivative of 1 is 0. Simple derivatives with 11 standard stuff. Okay, so let's simplify this now. Keep dy by dx on one side. dy by dx एक साइड को रखो. both these terms on the right hand side. So minus ये यहाँ पे आने वाला है, so that becomes plus 2
minus 2x. If you remember, derivatives of implicit function क्या करते हैं? Implicit function है ने combination of x y, x भी है y भी है. It is not y with respect to something. Combination of x y, so you get 2 dy by dx के दो टर्म्स है, वो लेफ्ट हैंड साइड को रखे. नाउ dy by dx को कॉमन ले लो. dy by dx कॉमन, टू वाई माइनस 4. यहां से 2 कॉमन है लेकिन वो लास्ट में करेंगे. टू माइनस 2x, यहां मल्टीप्लीकेशन साइन है, ये ब्रैकेट डिनोमिनेटर में जाएगा. यहां पे एज यूजुअल इम्प्लिसिट फंक्शन में जो करते हैं वही किया है. 2 कॉमन न्यूमरेटर में से, 2 कॉमन डिनोमिनेटर में से. 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, 2 इंटू ब्रैकेट y माइनस 2. 2 कैंसल्स. Call this as equation 1. मार्क करता हूं. अभी that gives us the slope of the tangent. dy by dx means slope of the tangent, so I'll call it as m. Let us call this as equation 1. ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया है एट द पॉइंट एक्स वाई. एट द पॉइंट एक्स वाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ओके, इफ एक्स वाई वॉज गिवन लाइक 3 4, हम लोग क्या करते हैं? पुट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड गेट वन कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर m. बट सिंस एक्स वाई आर नॉट गिवन, स्लोप ऐसे रहेगा. दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच आई विल कॉल इट एज m. फॉलोड? क्लियर? ओके, तो अभी क्या दिया है? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो फ्रेंड्स, टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? Remember, you have learnt in the 10th standard, slope of x-axis is taken as 0. Slope of y-axis is taken as undefined, infinity. Tan 90 is infinite. Angle made by x-axis with x-axis, 0. So slope of x-axis is 0. अभी क्या इंटरेस्टिंग बात है? Tangent is parallel to x-axis. Okay, so because tangent is parallel to x-axis, slope of the tangent will also be 0. Okay, equation 2. Because slope of the x-axis m equal to 0, slope of the tangent भी 0 ही हो जाएगा. So what do you conclude from this?
Once we are saying slope of the tangent is 1 minus x upon y minus 2. Now we have concluded that the slope of the tangent is 0, right? So this left hand side is equal to left hand side. So right hand side equal to right hand side, which means what? इसका मतलब है 1 minus x upon y minus 2 equal to 0. That is the thing we have written, dy by dx and a slope. और दो बार स्लोप मेंशन किया है यहाँ पे और यहाँ पे. So RHS equal to RHS. So 1 minus x upon y minus 2 equal to 0. Transitivity from equations 1 and 2. सिंपल सी बात है. तो अभी I will equate RHS and RHS. Let's see how to go ahead. I will rub this. ये इसका काम हो गया है अभी. So right hand side equal to right hand side. क्लियर? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर, लाइक दिस. So 0 into anything is 0. Therefore 1 equal to x. I take x on the right hand side, or x equal to 1. I got the value of x equal to 1. अभी y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? y की वैल्यू फाइंड करने के लिए make use of this equation. That will give you the value of y. Okay? Right. So to find y now, put x equal to 1 in this equation. x इक्वल टू 1 ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. तो जस्ट एक फट से देख लेंगे क्या किया है. dy by dx from equation of the curve, from that we get slope of the tangent as m. Again we are getting slope of the tangent as 0 because tangent is parallel to x axis और x axis का slope 0 है. When lines are parallel their slopes are equal, don't forget. तो x एक्सिस का स्लोप 0, इसलिए टेंजेंट का स्लोप भी 0 आ गया. सो RHS इक्वल टू RHS, फ्रॉम दैट वी गेट x इक्वल टू 1. नाउ लेट्स फाइंड आउट y. पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन. करो सब्स्टिट्यूट. पुट x इक्वल टू 1. वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. जहां पे x है वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट किया. पुट x इक्वल टू 1. आई वॉन्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ y. So 1 plus y squared minus 2 plus 4y plus 1 equal to 0. So y squared plus 4y
minus 2. 1 plus 1 is plus 2 equal to 0. minus 2 plus 2 कैंसल हो गया है. सो वाई स्क्वायर प्लस 4y में से y कॉमन निकालो. सो y इंटू ब्रैकेट y प्लस 4 इक्वल टू 0. वाई स्क्वायर प्लस 4y में से y कॉमन निकाला है. So we get two values. One answer is y equal to 0 or y plus 4 equal to 0, which means y equal to minus 4. ऐसे दो आंसर आ रहे हैं. ओके, so two values of y means case 1 point P equal to point P तो एक्स वाई लिया है ना, तो x की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी गॉट x इक्वल टू 1, दैट इज 1 0. y इज 0, x इज 1. ये एक आंसर है. केस 2 पॉइंट P कैन बी, you can call it as P1 and P2 now. एक सपोज P1 मिल गया, P1 मिल गया, because there are two cases. So P2 again, any point is x y, that is minus 4 0. Sorry, x is 1, y is minus 4. 1 minus 4. So P1 यहाँ पे, so P2 somewhere else, like over here or on the left hand side or below. It is just a rough diagram. The main thing is you get 2 points, P1 and P2. So basically यहाँ पे answer, most of the cases when the problem is lengthy, they will just ask the points, find the points on the curve for this condition, tangent parallel to x axis. लेकिन आगे यहाँ पे पूछा है find the equations of tangents. यानी P1 पे equation of tangent क्या है और P2 पे equation of tangent क्या है. There will be one more tangents. Okay, so I will solve one, the remaining you can try. तो equation of tangent at point P1 ये find out करेंगे. पहले किया है just as an exercise. You know how to find the equation of the tangent at any point. Okay, shall I rub this? हो गया. Okay, so last few steps now. Case 1, equation of tangent at P1. Case 1 answer. Slope point form. Y minus y1 is equal to m into brackets x minus x1. That is the equation of tangent. अभी x1 y1 means this gets converted into x1 y. Point of contact while using slope point form, it is taken as x1 y1. So y minus, I'll name it here, x1 y1. अभी इसको बोलते हैं, इसको भी x1 y1 while using slope point form, right? So y minus y1 means y minus 0. Slope of the tangent is 0 now. Find out क्या है ना equation 2 में basic slope of the tangent 0 आया है. So 0 into x minus 1, right? So y minus 0 is y, 0 into anything is 0.
y equal to 0. First one. Equation of tangent y equal to 0. केस 1 का आंसर. केस 2 का आंसर भी सॉल्व करेंगे. केस 2, इक्वेशन ऑफ tangent. Same slope point form. I hope it is visible clearly. Y minus minus 4, that is y plus 4 is equal to 0 into bracket x minus 1 again. So y plus 4 equal to 0. 0 into anything is 0. Therefore, second answer, equation of tangent y plus 4 equal to 0 or y equal to minus 4. These are the two answers that you get for the two tangents. Followed? So this was a slightly lengthy problem, but इसमें सब basic concept clear हो गए. Exam में they will mostly ask up till here. Find the points on the curve for certain conditions. So as we have seen, find two cases, find two equations for m और फिर equate करके get the values of x and y. That is the method. Go through it again, try to solve it again. Doubts you are always welcome to ask me. Okay? That will be all for today. Bye. Enjoy the problem. Share karo. See you.